Good morning to all of you, dear students. Today we will discuss about does everyone have access to the court? कि everyone one person has go to the court and they have access to the court. So कि in the principle all citizen of India can access the court in this country. Okay. So basically this is the first line and it is important line कि all Indian uh, can access the court in this country, or this implies that every citizen has a right to justice through the court. Okay, so as you read earlier, the courts play a very significant role in the protecting our fundamental rights. So as I told you, कि if your fundamental rights are violated, so you can go through the Supreme Court directly. So you have a right that you can go Supreme Court and you can appeal it. ठीक है. Or while the courts are available for all, in reality access to courts have has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedure involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. So basically देखो ये as I told you कि ना देखो there is a किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं. So देखो while the court are available for all, in reality access the court has been difficult for a वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर इंडिया. सो लीगली प्रोसीजर जो होता है उसके लिए मनी बहुत लगती है. ठीक है. देयर इज मैनी पेपर वर्क. सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज मनी, दूसरी इज पेपर वर्क. ठीक है. सो इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 90s 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL, that we call PIL. ठीक है. सो टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस. सो बेसिकली दिस इज़ द PIL. जो है एक ऑर्डनरी पीपल भी क्या है दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ओके. सो इट अलाउ एंड इंडिविजुअल और organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. So basically if your rights, as I told you ना कि if your rights were violated, so you can go through the High Court और सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट इज द वन विच इज़ इन न्यू दिल्ली एज आई टोल्ड यू, एंड हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट हैव अ हाई कोर्ट. लाइक उत्तराखंड में जैसे नैनीताल है. ठीक है. सो डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन बिकॉज ऑफ अ PIL. सो बेसिकली PIL से ही क्या है मिड डे मील क्या है लोगों को मिला हुआ है. ठीक है. एंड दिस इज़ द फोटो यू कैन सी. ठीक है. सो दिस इज़ द मिड डे मील विच इज़ इन द प्राइमरी लेवल के स्कूल में क्या है मिड डे मील मिलता है. एंड इफ़ यू गो टू द प्राइमरी स्कूल, सो यू कैन सी कि इन अ रिसेस टाइम यू विल ईट द फूड मेक बाय द दैट वी कॉल भोजन माता. ओके. भोजन माता जो है वो उस फूड को बनाती है और बच्चे वहीं जो है फूड को ईट करते हैं या खाते हैं. ठीक है. फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट इज access to justice. So the courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, as you saw in the above case. And the courts interpreted Article 21 the Constitution of the right to life to include to the right to food. So basically right to food. ठीक है. आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है. एज टू कि देखो हेल्थ से रिलेटेड जो इशू था हकीम शेख का वो भी क्या था राइट टू लाइफ से रिलेटेड था और आर्टिकल 21 के अंडर आता है. ठीक है. सो इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम जो है वो भी इससे रिलेटेड है राइट टू फूड से. ठीक है. सो हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल believe work against the best interest of the common person. For example, activists who works on issue concerning the rights to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction are a far cry from earlier judgments. So while recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgment like 1985 Olga Tellis vs Mumbai Municipal Corporation so had tried to protect the livelihood of slum dwellers. So basically कि there are many social activists. ठीक है. जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो कि who's a person know about the laws,
So basically they are helping the others, ठीक है, which are poor person, उनको हेल्प करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये जो मुंबई हाई कोर्ट में, सॉरी, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑन ओल्गा टेलिस के जो कि 1985 का कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच का. सो हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर्स. सो बेसिकली दे आर स्लम ड्वेलर्स. तो उनके जो प्रोटेक्ट हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ. तो बेसिकली आई थिंक इस चीज़ में जो जजमेंट है वो ओल्गा टेलिस के कि फॉर्म में किया हुआ था. ओके. सो इन दिस कि इन दिस चैप्टर वी हैड रीड कि हाउ द जस्टिस वी कैन achieve, and कि the fundamental rights, as you know, 6 fundamental rights, and no one can be violated, and कि उससे हमें क्या दूर नहीं ले जा सकता है for the fundamental rights as an Indian. Okay. So if your fundamental rights are violated, so you can go to the high court और सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो हाई कोर्ट कि स्टेट्स में है, और सुप्रीम कोर्ट कि कंट्री में एक ही है जो न्यू दिल्ली पे है. ठीक है. एंड यू कैन गो, यू कैन अपील द PIL. ठीक है. PIL डायरेक्टली आप अपील कर सकते हैं. सो हाउएवर इन स्पाइट of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the power of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. So कि देखो लेजिस्लेटिव भी है हमारे पास, एंड कि एग्जीक्यूटिव भी है. सो दे आर अदर वर्क. ओके. दे हैव अदर वर्क, दे हैव सेपरेट वर्क. बट कि लास्ट वन जो जुडिशरी है, ये क्या है, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. ओके. टू वर्क. ठीक है. सो दैट्स वाई क्या है कि अपने डिसीजन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं. सो बेसिकली द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key features of our democracy. So this is the key features of our democracy जो judiciary है. Okay. Because of कि this is the key features we can say, because of executive and legislative will not or will never interfere to the judiciary. Okay. So this is the end of the video, and I hope you will read this chapter line by line. And if you have not कि sometimes if you have not get, so you can ask me in any time. Okay. So goodbye, have a good day.